Okay. Now there are two necessary conditions for the sigha, offer and acceptance. Number one, conformity of offer and acceptance on the same subject matter. That if offerer has made an offer on a subject matter, then the second party must give his acceptance on the same subject matter. For example, seller said that I sold you my laptop. The other party said that okay, I bought your motorbike now. And the subject matter must be because the offer was made regarding laptop, so acceptance must be on laptop, not on any other subject matter. So this is the mandatory condition of the validity of offer and acceptance. The second one is issuance of offer and acceptance in the same session, same majlis. If offer a guy has made his offer, but the other party left him and did not convey his acceptance, he remained silent and he just left him, then the offer will stand expired, offer will be considered expired. Now, the after then he came back and he said that okay, I bought it. Now the offer has been expired. His saying okay, I bought it, it doesn't matter. Yes, if he said that okay, I bought it, then it will be considered offer. Then the other party, the seller, he must have to accept it now. तो ये कहा जाता है कि भाई सेम सेशन के अंदर हो. When we say the same session, now the question is what is the meaning of same session? Same session, same मजलिस, मजलिस अक्द, session of contract, इसका क्या मतलब है, हम इसको आगे इसको डिस्कस करते हैं. Now look at here, of this is the definition of session. Majlis, session is majlis. अल्ला यश्तगिल अहदुल आकिदैन बिअमल गैर मा उकिद लहुल मजलिस औ बिमा हुआ दलील इराज अनिल अक्द. One party may not turn busy in another activity other than the contract for which session is conducted, or in an action to pretend that one is not interested in this contract. तो इसका मतलब ये है, यानी कोई भी पार्टी, दूसरी पार्टी जो है या दोनों पार्टियों में से फ्रीकैन में से कोई एक जिस काम के लिए वो बैठे हुए हैं, एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, वो उस काम के अलावा कोई और काम करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि उनका अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा उस कॉन्ट्रैक्ट में जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो इकट्ठे हुए हैं. तो वो जैसे ही उसका इंटरेस्ट उनका खत्म हो जाएगा, तो ये समझ लिया जाएगा कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट में दिलचस्पी नहीं है, तो लिहाजा अब वो मजलिस एंड शुमार की जाएगी. जैसे ही उनके इंटरेस्ट खत्म होंगे, भले वो सारे के सारे वहीं बैठे रहें, उठ के कोई भी ना जाए, लेकिन अगर अब वो कोई और काम करना शुरू कर दिया है, अब ये समझा जाएगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो सेशन था वो खत्म हो गया. तो इस सेशन का मतलब ये है कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जब बैठी हैं, तो जो अब इसके बारे में दो चीजें हैं. नो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मजलिस. नंबर वन, सेम सेशन बाय प्लेस एंड टाइम, सेम सेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. By place and time mean that parties are sitting on same room, same place, and at the same time both are here. So that is why this will be considered same session by place and time. Sometimes there is a same session by time, but they are different places. For example, if one party is sitting in Lahore, other party is in Islamabad, and both are on telephone. One is in Malaysia and one is in Pakistan, but they are talking to each other on telephonic conversation. Then we will say that the time is same. That they are there is a same majlis, same session with respect to time. तो हम कहते हैं कि भाई दोनों की दोनों चूंकि एक ही वक्त में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये उनका एक ही सेशन, एक ही मजलिस शुमार होगा. तो हम इसे कहते हैं कि भाई वो सेम सेशन की बात होनी चाहिए. अगर एक आदमी ने, एक फरीक ने ऑफर किया, तो दूसरे फरीक ने सुना और उसने मुंह इधर कर लिया और कोई और बात करना शुरू कर दी, तो कहते हैं जो उसने ऑफर की थी वो ऑफर खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब सेशन ही खत्म हो गया. सेम एज फोन पे बात चल रही थी, उसने ऑफर की, उसने कहा
अच्छा वो सुनाओ और क्या बात हुई और क्या बात हुई, तो कहते हैं उसने कोई और बातें करना शुरू कर दी और उसने जो ऑफर की थी उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ऑफर खुद ब खुद जो है वो कंसिडर होगी कि भी एक्सपायर हो गई है ऑफर। So offer and acceptance must be connected with each other in same majlis, whether it is same majlis with by place and time or by time. Otherwise, contract would be void because offer did not get acceptance. क्योंकि वहां पर एक्सेप्टेंस ही नहीं आई ऑफर के साथ, तो इस वजह से वो कहा जाता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की सेशन सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक दफा सेशन एंड हो गया और दूसरे सेशन में आकर कोई एक्सेप्टेंस दे दे, तो जब वो दूसरे सेशन में एक्सेप्टेंस देगा तो इसका मतलब है तो वो सिर्फ एक्सेप्टेंस एग्जिस्ट कर रही होगी, ऑफर तो उसमें हुई खत्म हो गई है। तो सिर्फ एक्सेप्टेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद है existence of parties in majlis is not condition for the validity of contract. एग्जिस्टिंग इमाम अहमद बिन हम्बल या हम्बली स्कूल वो ये कहते हैं कि भी सेशन कॉन्ट्रैक्ट तब तक रहता है जब तक पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेशन में बैठी हुई हैं। दिस इज द व्यू ऑफ that uh, that when parties are separated then it will be considered that session is ended। हम इसको अगले इसको पार्ट में इसको डिस्कस करते हैं।